हेलो एवरीवन। सो आज हम एक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली डिस्कस। हमें वो कंपनी जनरली ज़्यादा पसंद हैं जो कि कुछ बनाती हैं, बट दिस कंपनी इज़ डिफरेंट एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट वी जस्ट वांट टू डिस्कस a quote from Warren Buffett. Learn something about the stock market, you should definitely go through the letters that he has written to Berkshire Hathaway. उससे आपको काफ़ी इन डेप्थ मिलेगा एंड हाउ एक्चुअली ही यूज टू असेस द कंपनीज. सो द कोट गोज लाइक इफ यू बाय गुड बिजनेसेस एट रीजनेबल प्राइस एंड होल्ड देम, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. हमने ये कोट इसलिए स्टार्टिंग में शेयर किया बिकॉज इट इज सिंपल एंड दिस इज बेसिकली द होल क्रक्स बिहाइंड मार्केट. स्टॉक मार्केट में आपको वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि आपको गुड बिजनेस मिले, बट जो सेकंड पॉइंट है टू होल्ड देम विद पेशेंस इज मच मोर important than getting good business, because there will be one person who will be getting out of the business after 2x and someone who is getting 100x return on that. So that holding thing matters the most apart from having a good business. So 10 लोग होंगे मार्केट में, उनमें से 9 लोग अच्छे बिजनेसेस निकाल लेंगे, बट जो एक्स फैक्टर होता है वो पेशेंस होता है किसी भी wealth creation में. So yeah, that's what we found very important to share with you all. So let's quickly jump into what company we were talking about. So आज जो कंपनी हम अपने मल्टीबैगर पोर्टफोलियो में लेने वाले हैं, दैट इज फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स. सो कोर में जाएं इस कंपनी के, तो व्हाट इट बेसिकली डज इज इट हेल्प्स डिफरेंट इन VFX एंड visual specialization things to different films and platforms. So what it basically does is a full-fledged creative VFX studio based out in India and US and Canada. They also have an office of London, which they have not mentioned it over here. But yeah, this company is expanding really fast. इस कंपनी को हम एक साल से ट्रैक कर रहे हैं एंड वी हैव दिस कंपनी एट अराउंड 250 करोड़ ऑफ मार्केट कैप. वहां से करीब करीब दो गुना हो चुकी कंपनी. और ये काफी स्पेशल कंपनी है क्योंकि एट दिस मार्केट कैप टू गेट दिस काइंड ऑफ अ सनराइज इंडस्ट्री कंपनी इज वेरी यूनिक. क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट में. एंड this is like a creative studio kind of a company, and this has really worked with a lot of movies. If you go into the website, I think you will get to know like more of the logos that you have already heard about: Joker, Avengers, and it has also worked in Indian Triple R, Bahubali. All these things, all these banners, they have worked under them. So that's a really good thing about this company at this market cap. And जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस कंपनी के बारे में कि दे हैव रिसेंटली गॉट एन ऑर्डर ऑफ 50 crores from this Alan 2 movie. So Alan, if you don't know, is a South Indian VFX based movie which did really great in that particular for the past part one. So they have decided a budget of 50 with no budget cost constants as such. So this is very interesting, क्योंकि अगर कंपनी को 50 करोड़ का ऑर्डर यहाँ से मिल रहा है तो that is something it company has proved itself on different stages. That's why they are getting such orders. सो एक और जो काफ़ी यूनिक चीज़ है इस कंपनी के बारे में कि इट हैज़ अ TPN सर्टिफाइड थिंग. सो TPN सर्टिफिकेशन इज बेसिकली अ लाइसेंस फॉर VFX firm to have in order to get projects, international projects, so Hollywood projects, if it wants to work with Warner Bros or Disney. So this is a certificate that is pre-mandatory. So this is something that they already have, and they are working a lot in getting a lot of international projects, as they have mentioned in their con call as well. सो चलिए बिना देर करते हुए इसके मार्केट कैप में देखते हैं और क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं. सो टू स्टार्ट विथ मार्केट कैप 650 करोड़ का है. स्टॉक P34 का है, इंडस्ट्री P61 का है. काफ़ी सस्ती है अभी कंपनी. और कंसीडरिंग द मार्केट कैप एंड द बिजनेस दे हैव अहेड, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इसका पोटेंशियल है अपसाइड.
एंड गोइंग थ्रू द रोज एंड आरओई, ये काफ़ी अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 40% का है, प्रमोटर होल्डिंग 54%, एंड इंडस्ट्री पी, ऑल दीज थिंग्स आर ओके। लेट्स गो टू द प्राइस। सो इफ़ यू सी, कंपनी लिस्ट हुई थी अक्टूबर 22 में, और उसके बाद लो बनाया था 150 रुपये के आसपास। उसके बाद से इट हैज़ डन रियली वेल। कंपनी वहाँ से करीब करीब 3 गुना हो चुकी है। एंड इट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट वी होल्ड दिस कंपनी एट अराउंड 200 के लेवल से, और द कंपनी बेसिकली हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग दिस विथ यू। कंपनी ट्रेड्स लॉट में ट्रेड करती है, क्योंकि अभी एसएमई प्लेटफॉर्म में है। सो आपको अगर इस कंपनी को बाय करना है तो यू विल हैव टू पुट अराउंड 1.5 to 2 lakhs. So if in case you have that amount, then you can go forward, or otherwise you can wait for it to get registered in the main platform as well. So till that time, let's dive into what kind of fundamentals that it has. uh, Over here they are saying like stock is trading at 10.2, that is okay. Okay, repeated profit holding over last quarter holding. So this is something that they have been asked on the con call, and this is not something to worry about as far as like it stays above 50%. The promoter holding is still above 50%, so that should not be an issue. um, um, Apart from this, let's see what is there inside the half yearly results. सितंबर 2020 में कंपनी 26 करोड़ का धंधा करती थी, मार्च के एंड में 32 का, एंड रिसेंट में 41 करोड़ का किया है। प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 40% के है, एंड बाकी सारे पैरामीटर्स भी ठीक लग रहे हैं। लेट्स गो ऑन टू ईयर ऑन ईयर। सो 2019 में कंपनी 10 करोड़ का धंधा करती थी, उसके बाद थोड़ा स्टेगनेंसी रहा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। बट 22 में इन्होंने 22 करोड़ का धंधा किया, और अभी रिसेंट में 73 करोड़ पे पहुंच गए। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू काउंट। सो सपोज अगर कंपनी इस साल तक, पिछले साल तक 50 करोड़ का धंधा करती थी, इट हैज ऑलरेडी गॉट अ प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 50 करोड़, एज यू कैन सी ओवर हेयर। सो दिस रिपोर्ट हैज कम अराउंड 23rd of January, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड वंस दिस थिंग कम्स इनटू द बैलेंस शीट, ये कंपनी काफ़ी भागने वाली है। आई डोंट नो, लाइक अभी मार्केट में इतनी अच्छे से न्यूज़ फैली नहीं है, बट आई थिंक वंस इट्स गेट्स आउट एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर द मार्केट, this share is gonna run like hell. So it is better that you have it at these current levels only, if you can. So going forward, in the year on year, we see like the operating profit margins have increased. That's a good thing. Company in the con call has mentioned that they have switched from like pre-order basis. Like what they used to do is that they used to do the work and then get the payment, but now they are working on like receipt basis, because they will be generating the um, bills before the start of project, and no matter what, they will be getting the payment, so that this thing is gonna get a lot more clearer from them. And also there were some payments which we got to know that was stuck from uh, big movie houses, but as they were having good reputation, the management is quite sure about that they will get the payment in time. So that's a good thing. But going forward, the business is gonna be more organic and kind of mature. So that's what we expect from a business like this to give us better returns in future. Apart from this, sales growth 65% का है 3 years का, 3 years का profit growth 428 है, and all this is good. Return on equity double digit में काफ़ी अच्छा है. So parameters wise the company looks good. If we come to the balance sheet, equity capital obviously कंपनी का 12 करोड़ का है. So ये अराउंड शायद जब IPO आया है तभी से स्टेगनेंट है, तो दैट इज गुड. रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी है, 43 करोड़ के, लोन 18 है, दैट इज ओके, that is very fine. Other liabilities is okay. फिक्स एसेट्स कंपनी पास 11 करोड़ का है. ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे फ्री कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं. कंपनी काफ़ी छोटी है, तो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटिंग अप द स्टूडियोज.
so that is okay. But ये जो free cash flows है, that is very good to have at this level. As we always say, free cash flow होना किसी भी कंपनी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कंपनी घर अपने पैसा कितना ले जा रही है. So that is very good to see. Apart from this, data days cash conversion cycle थोड़ा सा बड़ा है, but if you go through this company, so the kind of payment method they are following, as they have mentioned in their con call, will take care of this. It's not something to worry about as of now. Working capital थोड़ा ज़्यादा है, so so this is something to worry about. So we will just have this company on radar. If this keeps on decreasing or increasing on coming half yearly results, so yeah. शेयर होल्डिंग पैटर्न एज वी साइड 54% का है, सो दैट इज गुड. एफ भी हैं इस कंपनी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप अगर इधर पे एफ का डेटा देखें तो मॉर्गन स्टैनली इसमें है, नेफ कैपिटल है, तो काफ़ी अच्छे फंड्स इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. ऑल्सो इफ़ यू सी डी भी हैं कुछ. सो all in all, the company looks good from all over perspective. um, why we are considering this company is because VFX का काफी ज़्यादा usage होने वाला है आने वाले टाइम में. Most of the films that we have, the blockbusters like Triple R, Bahubali, and even the animated animation films which are there. So these films are having a lot of VFX usage, and the budget for these films are going from somewhere from 50 to 70%. So this is something that is gonna take a um, lot of cash out of these companies, and this is gonna be can be seen into the balance sheet of the these particular companies which are providing these services. Apart from this, let's go to the company website quickly. So they have put a video over there, um, which we found like how they do this creation process and how the VFX work. Also, one thing that they mentioned in the video was in the SME platform when they were getting listed, the CEO said that most of these work that is being done is a property of the company only, so it can be reused. It is not something that if we have made some, suppose some scenes we have worked for a movie, say let's say Triple R, so they can reuse those scenes in other plays as well. So that is a good thing that this is a company property only, even after they have worked with a particular production house. So apart from this, they are also working on getting different projects. They have also won a bid recently, if I'm not wrong, for from Netflix. So this is something that is very good, and they are bidding continuously for different OTTs as well. Are having good association with different OTTs and still working on different kind of VFX movies. So yeah, all in all, the company looks good, and we think that this is a sunrise industry, as Mr. Vijay Kedia says. So काफी अच्छा tailwind है इसका, and I think that's why this company is gonna get a lot of um, upside going forward. So yeah, if you want to invest in this company, you can definitely put some money over here only, and you can buy one or two lots, whatever is feasible for you. And if not, you can wait and watch for this company to get listed into the main platform and probably buy some shares there. But we will highly recommend this company to have in your portfolio, because coming in the next year, I think this company can easily double from over here prices as well. So we will be adding more on this, and we are not CB registered. Do consult your financial advisor before taking any decisions. Do keep watching for further updates and quarterly results. We are going to discuss them over here. Thanks for watching.